हरे कृष्णा दर्शकों, टॉक शो की हमारी श्रृंखला योर क्वेश्चंस माय आंसर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके होते हैं और आंसर्स हर ग्रेस राधिका कृपा देवी दासी के होते हैं। Serving the instructions of her Guru Maharaj for over 2 decades now, she gives her 100% each day. वो अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः निर्वाह करते हुए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो एक बहुत सिंसियर और एग्जॉल्टेड डिवोटी भी हैं और इसका पूरा श्रेय वो अपने गुरु महाराज की कृपा और परिवार के सहयोग को देती हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इट सेज हु डिसाइड्स योर फ्यूचर। आपका भविष्य कौन तय करता है? तो बचपन में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स में हम एक गाना सुना करते थे विच सेड के सेरा सेरा whatever will be the future is not ours to see के सेरा सेरा what will be। तो ऐसा लगता था कि फ्यूचर हमारे हाथों में नहीं है। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्शंस, कॉफी रीडिंग, टैरो कार्ड, क्लेयरवॉयंस और साइकिक रीडिंग, ये सब को बहुत पनपते हुए देखा। लोगों को भी इसे बहुत मान्यता देते हुए देखा। सबको जिज्ञासा रहती थी कि भविष्य का रहस्य जानने के लिए, शादी कब होगी, कैसे होगी, नौकरी क्या होगी, बच्चे कब होंगे, वो कैसे बड़े होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हर प्रेडिक्शन तो सही नहीं होती, पर जब अगर सही हो जाती थी तो हम बहुत आराम से अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को भी वो एस्ट्रोलॉजर को सजेस्ट किया करते थे। और अगर प्रेडिक्शन सही नहीं होती थी तो हम एक नए एस्ट्रोलॉजर की खोज में निकल जाया करते थे, पर हमारा जो सफ़र था वो रुकता नहीं था। तो माता जी, सो प्रिडिक्शंस तो वो बताती हैं कि जो हमारे भविष्य के खजाने में है, पर क्या ऐसे क्या तरीके हैं, आज हम माता जी से जानेंगे। सो लेट्स वेलकम माता जी राधिका कृपा देवी दासी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, thank you for hosting me. So, बहुत ही सुंदर सो song you sang. That was beautiful. We know in our childhood we had to listen. We used to listen this, and yes, what had to be had to be. We used to think. That's right. But then, एब्सोल्युटली माता जी। सो yeah, मेरा पहला मैं ये पूछना चाह रही थी माता जी कि जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो तो ये बताती है कि हमारे फ्यूचर के खजाने में एक्चुअली में है क्या। सो डज आवर डेस्टिनी डिसाइड आवर फ्यूचर? इफ सो देन हाउ इज डेस्टिनी क्रिएटेड, और ये डेस्टिनी है क्या? मतलब कि हमारे जो किस्मत में जो लिखा है वही हमें फ्यूचर में मिलता है, और ये किस्मत क्या है और ये किस्मत कैसे बनती है? yes, that is बड़े intricate questions है और बड़ा intricate mathematics है ये. और ये mathematics आ रहा है by the Supreme Lord himself. तो ये भगवान का मैथमेटिक्स है. इट अमेजेस अस. मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं थ्रू थ्योरम्स, थ्रू फॉर्मूलाज. तो ऐसे ही भगवान ने भी सेट फॉर्मूलाज दिए. ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस. सो ही इज गिवन सम फॉर्मूलाज. एंड यस, द डेस्टिनी, द बिगेस्ट पार्ट इज एवरीबडी इज इंट्रीग्ड बाय द वर्ड डेस्टिनी. सो हम सोचते हैं जो हो रहा है ये होना ही था और ऐसे ही होना था. सो लेट इट बी, लेट इट गो, वी आर गोइंग विद द फ्लो. जो करना है करते रहिए. हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं ये करते ही रहना है और ऐसे ही भगवान चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं. तो कहीं कुछ उसमें भगवान है, कहीं हमारे कर्म है, बड़ा कुछ इंट्रिकेटली इन्वॉल्व है. एंड डेस्टिनी इज इन आवर हैंड्स. ये डेस्टिनी, भगवान कहते हैं डेस्टिनी इज विद यू, इट्स इन योर ओन हैंड्स. यू कैन शेप योर डेस्टिनी योरसेल्फ. और डेस्टिनी शेप अप कैसे होती है? डेस्टिनी शेप अप होती है जो हमारा अभ्यास, व्हाट वी डू एवरी डे, व्हाट वी फॉलो एवरी डे, दैट्स गोइंग टू बिकम आवर हैबिट्स. एंड दीज हैबिट्स आर एक्चुअली गोइंग टू शेप अप आवर डेस्टिनी. और कर्म जो होते हैं, जो हमने एक्टिविटीज पहले करी हैं, they also influence a lot. They put us in particular situations, and those situations we will handle according to our own character. And character, how is this built? By our habits. What we do, that makes our character. Our attitude, our everything depends upon our own perspective. Our habits, again and again. Habits means जो आपने बचपन से करते आए वो आपका स्वभाव बन गया, वो आपकी हैबिट बन गई है. यू हैव अ हैबिट. बचपन से कोई जल्दी उठता था, उसकी हैबिट है जल्दी ही उठेगा. किसी की हैबिट है बचपन से वो
जैसा कर रहा था वो वैसा ही करना चाहता है अभी भी. तो कहता है इट्स ऑल माई हैबिट, यू नो, आई कैन नॉट चेंज माई हैबिट्स, दे आई कांट चेंज देम, दे आर आउट ऑफ माई कंट्रोल. So destiny is one thing. Destiny can be changed. That Krishna said. भगवान ने भी कहा है. So Gita, all the scriptures say that. And it is true. जब हम कहते हैं destiny is in my own hands, I can shape my destiny. So that is the truth of life. And astrology is a science. But in Kali Yuga, there are hardly those astrologers which are very true to their profession. You can't find the right calculations, they cannot do. Other day I was listening, even Guru Maharaj was saying the astrology is actually, it's totally dependent on computer science now these days. So hardly there is any manual calculations, or they put their own efforts into it. So astrology is abhi to myth ho gaya. It's not the correct information you get through astrology. So yes, the biggest challenge in our life is about a destiny and about how we know our future. So everybody is intrigued by their future. कि हमारा आगे future क्या होगा, अब क्या होने वाला है. सस्पेंस है ना, अभी क्या होने वाला है, अब क्या होगा. और हम चाहते हैं वो जल्दी से अनफोल्ड हो जाए हमारे सामने, वो सस्पेंस अभी खुल जाए. तो वो सस्पेंस को खोलने के लिए हम इतने ईगर होते हैं कि हम हर जगह इधर उधर भटक जाते हैं. कोई कुछ कहता है हम उधर चल पड़ते हैं. जैसे ही आपने खुद ही कहा, एक एस्ट्रोलॉजर ने वो बात बताई जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, वी लुक फॉर द अदर वन. एंड ऐसा चलता ही रहेगा. इफ यू आर इन्वॉल्व इनटू इट, you will waste your time running after the astrologers to know your future, to know the solution to the problem that has come to you, rather taking that in your own hand, the decision in your own hands. So we have to go into the scriptures, I think. So let me go ahead if you want to add something to it. Yes. राइट. सो माता जी, दैट मीन्स दैट हैबिट जो हम क्रिएट करते हैं, दैट क्रिएट्स आवर फ्यूचर. अब हैबिट, जैसे अगर हम स्पेलिंग भी देखें उसके, तो अगर हम हैबिट का एच भी हटा दें तो अ बिट रह जाता है, ए हटा दें तो बिट रह जाता है, और बी हटा दें तो भी इट रह ही जाता है. सो इट इज़ सो डीप एम्बेडेड इन आवर कंडीशनिंग. हम शुरू से हमारा इतना वो रहता है कंडीशनिंग. तो नोबडी इज़ परफेक्ट. किसी की कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कोई और कुछ कंडीशनिंग की वजह से कुछ बुरी आदतें भी होती हैं. सो एंड ये भी कहते हैं कि अच्छी मतलब पुरानी आदतों को नई आदतों से सब्सटीट्यूट करने के लिए अगर आप 21 डेज तक कुछ चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपकी आदत में शामिल हो जाता है. पर मुझे ऐसा लगता है माता जी दैट 21 डेज के बाद भी ब्रेन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता. आपने एक आदत बना ली, उसको आपने थोड़ी देर सस्टेन करा, पर अगर आप में थोड़ा-सा भी आप पीछे हटे या थोड़ा-सा भी आपने लैग करा, तो आप वापस जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाते हैं. सो ऐसे क्यों नहीं होता कि कोई भी आदत हमारी मतलब हम सब्स्टिट्यूट करते तो परमानेंट बन जाए? व्हाई डज़न्ट ब्रेन सपोर्ट अस एंड टेल अस दैट ये दिस इज़ गुड फॉर यू एंड हुक्स ऑन टू दैट? हम क्यों मतलब बार-बार वापस-वापस वहीं पीछे जाते रहते हैं? Yes. 21 डेज़ में भी हमारी आदत कन्फर्म हो क्यों नहीं जाती? Because 21 days is such a very short period. You know, habits जो हैं, they die, कहा गया ना, they die very hard. It's very not easy to kill your habits. और भगवान तो यहाँ तक बता देते हैं स्क्रिप्चर्स की हैबिट्स तो प्रीवियस बर्थ से भी चलती आ रही हैं साथ में. हम उनको भी छोड़कर नहीं, अभी जब हमने नया देह लिया है तो हम अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नहीं आए हैं. वो कहाँ थी, वो संस्कार बन जाती है और हमारे मन में निहित हो जाती है. दे गेट एम्बेडेड इन आवर माइंड. And we've got two bodies. It's a very deep thing I'm going to tell you. The gross body and a subtle body. So gross body dies on its own. So अगर वो हैबिट ग्रॉस बॉडी में होती तो वो अपने आप ही इस शरीर के साथ खत्म हो जाती, फिर न्यू हैबिट्स न्यू लाइफ में बनती जाती. पर ग्रॉस बॉडी तो अपने आप खत्म हो जाएगी, बट जो माइंड है वो सटल बॉडी बनाता है. माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो मेक्स योर सटल बॉडी. एंड सटल बॉडी में इज योर सोल. The soul does not die. Soul has to take another body after death. The soul travels. और वो किस में फंसी हुई है? The mind, intelligence and false ego. अब माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, वो पुरानी आदतों को साथ लेके आ रहा है. एक ही दो सिबलिंग्स हैं, एक बच्चा बहुत शांत है, एक बच्चा बहुत समझदार है, बहुत सुनता है पेरेंट्स की, दूसरा बड़ा शरारती है. वही पेरेंट्स है, वही सब कुछ, जेनेटिक ऑर्डर वही है, सब कुछ वही है दोनों में. But then there is a lot of difference in their nature, in their habits, because they have carried that from the previous birth also.
बट अगर हम उसको ना भी देखें तो अभी की बात भी कर लें, चलो हम वी फॉरगेट दैट, वी लीव दैट असाइड, हम आज की बात करते हैं। हम प्रेजेंट लाइफ में बताओ जी, हैबिट्स जो हैं दे डोंट, अभी आपने जैसे कहा द हैबिट्स डोंट डाई, 21 days के बाद they should be there, they should be permanent now in our character, but what happens, we go back, हमारी टेंडेंसी है, हमारा माइंड हमें फिर वापस वहीं ले जाता है। तभी इसमें सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल है, आई थिंक सो, दैट इज दी इवन व्हेन यू लूज वेट यू टेल योर माइंड कि मुझे वेट लूज करना है, एंड यू स्टॉप ईटिंग पर्टिकुलर थिंग्स, डाइट परफेक्ट डाइट लेते हो, फ्यू डेज लेते हो, फ्यू मंथ्स लेते हो, फ्यू ईयर्स लेते हो, पर देखा गया है जो रिड्यूस कर लेते हैं वेट, आफ्टर सम टाइम दे अगेन पुट ऑन वेट, दे गो बैक सेम टू द वेइंग स्केल, उसी नीडल पे वापस आ जाते। सो हैबिट्स को बहुत मुश्किल है ट्रांसफॉर्म करना, एंड दे हैव, दैट हैज टू बी डन फ्रॉम द रूट, रूट तक, जड़ से जाकर। सो जड़ से जाकर हम कैसे कर सकते हैं? So I was thinking, like I was going through the Bhagavad Gita, I was going through other scriptures. So I came upon few points that we should take up in our habits, you know, we should take up in our character, we should take up in our nature, that what we should do. So first is we should be actually, as the scriptures say, हमें अपने आप को एक तो सुबह जल्दी उठना है, to empower your own mind and empower your body. These getting up early in the morning, it does two things: it empowers your mind, it empowers your body, it gives you the strength, it gives you the strength to actually, the whole day is with you then, and you can plan out your strategy so well. When the whole world is snoozing, sara world so raha is time, but you are up, you can take the challenges. One, if one person really wants to be, you know, have high performance habits, those habits that will actually make a good destiny for you, I'm talking about that. A good destiny means good habits. Good habits mean that you are following, आपको अपने shape करना future. You want a future that is going to be very blissful. Everybody wants a future. हर कोई ऐसा future चाहता है जो बहुत blissful हो, जो बहुत ही सुंदर हो। तो वो future कैसे मिलेगा? वो success. Future means you want to be successful. You want to be successful. That's clear. Future, अच्छा future का मतलब ही यही है, you want to be successful. तो हम सक्सेस मेजर कैसे करते हैं, पहले ये समझना है। हम सक्सेस किस चीज में मेजर करते हैं? 99.9% पीपल मेजर सक्सेस विद मनी, कि इफ वी आर वेरी रिच वी आर सक्सेसफुल। अगर मैं ये कर लूंगा, वो जॉब मिल गया, हाई पैकेज, बिग पैकेज, ओ देन आई एम सक्सेसफुल। अगर वो नहीं मिला तो दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज नॉट बिकमिंग, द होल वर्ल्ड इज नॉट रिच, सो दैट मीन्स दे आर नॉट सक्सेसफुल। हम वो ये सोचकर डिप्रेस हो जाएं कि हम सक्सेसफुल ही नहीं है, हम वी आर नॉट फिल्दी रिच, सो वी आर नॉट सक्सेसफुल, नो। सो वी शुड मेजर सक्सेस विद हैप्पीनेस, हाउ कंटेंट आई एम, हाउ हैप्पी आई एम। So the things that give you happiness makes you successful. First thing, we should actually accept that. So usko paane ke liye, that contentment, that happiness, one should get up early in the morning, take the everything, because that is the time, that is the fresh time. जब फ्रेश फ्लावर्स भगवान को चढ़ा जाते हैं, यू लाइक फ्रेश फ्लावर्स, यू डोंट लाइक स्टेल फ्लावर्स। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट गिव्स यू द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग। वन शुड गेट अप बिफोर द सनराइज, सी द सनराइज एवरी डे इन योर लाइफ। Every day when you see the sunrise, that means every day there is positivity in your life. The sun is actually a sign of positive energy. So that is every day when you're seeing, लोग तो स्पेशली उठते हैं, अच्छा आज उठ के ना सनराइज देखेंगे, आज यहाँ जाएंगे सनराइज देखने के लिए। तो जो एवरीडे मॉर्निंग उठ रहे हैं वो तो सनराइज तो रोज एंजॉय कर रहे हैं। The rose they enjoy that orange sky, you know, that is the beauty of the sunrise. So it gives you freshness. So why not accept the freshness every day in your life, every moment in your life? So this is very important for these habits. I think so. I'll talk about next points more elaborately. First, let me ask, hear from you what Absolutely, you want. Mataji. We'll get to know more points, as we proceed further. So that means that habits को बना लेने के बाद उसको निरंतर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, so that वो हमारे जीवन में हमारे साथ रह सके. And for that you said कि first is like waking up early, so that when you wake up early, then you rule the day, otherwise the day rules you. ऐसे हो जाता है जी माता जी. So माता जी, हमें तो प्रैक्टिस करना है at our age.
बट कुछ जैसे हम बच्चों के लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, उनके लिए बहुत प्लानिंग भी करते हैं टू गिव देम सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। सो कुछ ऐसी आदतें जो हम बच्चों में बचपन से डाल दें, जिससे कल को हम रहें ना रहें पर उनकी आदतों से वो अपना फ्यूचर संवार सके। कुछ ऐसी कुछ आदतें, 4-5 ही आदतें जो कि हम बच्चों में डाल सकें। Yes, that's very important. The first, बच्चों में आदत डालने से पहले हमें गुड एग्जाम्पल खुद बनना पड़ेगा. That's very important. The parents, they don't want to become good examples themselves, but they want all goodness in their kids. They want to see all goodness in their kids, but they don't want themselves to be good. और गुडनेस की डेफिनेशन जो है वो हम अपने अपने आराम से, अपने जो हमें सूट करता है ना, वही उसको हम वैसे ही बेंड कर देते हैं. व्हाट गुडनेस इज, the real goodness is when you are actually content. The first thing again I said, when you are happy in your mind, you're content in yourself. That is the real success. That is what you do to bring that. That is the goodness. That is the definition of goodness. Goodness doesn't mean that आप कहोगे अच्छा मुझे कंटेंटमेंट मिलती है कि मैं किसी भूखे को रोटी खिला दूं या किसी ऑर्फनेज में कुछ आई वर्क देयर, आई गिव सम टाइम देयर. दैट्स अ वेरी पाइस डीड, इंडीड वेरी गुड डीड. बस उसमें हमें, when we get connected to higher challenges, then we can easily shape up our future very beautifully. The higher challenges is like you challenge yourself to do, you compete with yourself every day. First thing in life is children, we should instill in our children that they should compete with own self every day. That is कि जैसा कल किया था उससे बेटर आज करना है. जो आज बेटर, आज के जब नेक्स्ट डे, टुमारो विल कम, टुमारो आई विल डू बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे. ये मन में रखना है. द स्ट्रेंथ लेना है. और ये स्ट्रेंथ आएगी कहाँ से? We'll come later to the point from where this strength they will generate. So they should actually challenge themselves to do hard things. They should listen to constructive feedback. They should be prepared for that. The parents, they try to give constructive feedback, but the children, they should be trained for that they are ready to accept the constructive feedback. That's very important. I'm not talking about the criticism. I'm talking about these constructive opinions coming from other people, from their near and dear ones. So children, they should be prepared, because ego kill nahi hogi to samajh nahi aayega. The habits जो हैं, they are going to form your destiny. Destiny is, हम चाहते हैं हमारी डेस्टिनी जो हो वो सुपर बेस्ट हो. दैट शुड बी द बेस्ट, यू नो, सक्सेसफुल. और वो करने के लिए आपके अंदर चैलेंज होना चाहिए एक्सेप्ट करने का कि मुझे क्या करना है लाइफ में. बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ चैलेंजेस अहेड. लाइफ इज अ स्ट्रगल. ये हमें पता होना चाहिए. डेस्टिनी जो भी हमारा गोल है लाइफ में, because destiny means the goal that we achieve, that success we achieve, that is our destiny. Everybody wants that कि मेरी destiny. Who is going to decide our future? Future is every moment. आज अभी present है, tomorrow is our future. So वो कल जो future है वो perfect कैसे होगा? अगर आज present में आप अच्छा करोगे तो tomorrow will be best. If you don't do the present, take the present nicely, how will your tomorrow will be good? आप कल की बात कर रहे हो कि फ्यूचर मीन्स कल, तो कल मेरा अच्छा होना चाहिए. अगर आज मैं नेगेटिव थिंकिंग कर रहा हूँ, आज मैं नेगेटिविटी में फंसा हूँ, आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, आज मैं आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, सो हाउ कैन आई थिंक दैट माई फ्यूचर टुमारो इज गोइंग टू बी गुड? इट कैन नॉट बी. इट डिपेंड्स अपॉन टुडे. योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन टुडे, प्रेजेंट पे. और प्रेजेंट, जैसे कहा कि हैबिट्स, they decide your future, they decide your character, they decide your attitude. तो हमारा एटीट्यूड, हमारा कैरेक्टर, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा ये सोच कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा, आई विल बी एक्चुअली टेकिंग द opinions of my near and dear ones, taking their feedback, that would help me to construct my habits better and make my present good. तो बच्चों को एक तो ये सिखाना है कि जो प्रेजेंट है उसको अच्छा करना है. फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट के, फ्यूचर की स्ट्रेस में प्रेजेंट को गंवाना नहीं है. What happens is parents put so much of pressure on their kids that what happens is वो कि फ्यूचर में क्या होगा, तुम्हारा आगे चल के क्या होगा. और पेरेंट्स भी फ्यूचर के
चिंता में अपने बच्चों पर बहुत प्रेशर रखते हैं और अपने ऊपर भी प्रेशर लेते हैं। लाइक यू सेड, कल हम रहे ना रहे, हमारे बच्चों में हम इतना कुछ दे जाएं, तो हमें देना क्या है? क्योंकि मनी जो धन छोड़ जाएंगे वो तो वो कैसा यूज करेंगे वी डोंट नो, पर जो धन छोड़ के जाए उसको वो अच्छे से ठीक तरह से उसका उपयोग कर सके ताकि वो सुखी रह सके, वो अच्छे से जीवन जी सके, इसकी तैयारी हमें उन्हें करानी है। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें खुद अच्छे बनना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स आवरसेल्व्स, दोज ऑल Thank थिंग्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क हार्ड। वो वर्क हार्ड किस में करना है? टू बिल्ड योर ओन कैरेक्टर, टू बिल्ड योर ओन गुड हैबिट्स, right, एंड दे Mataji. आर So हियर। while sorry, Mataji. So while you're speaking, the entire thing, a lot of questions kept coming on my mind. First is like every 5 पहले होता था 10 साल में जनरेशन चेंज होती थी, अब 5 years में ही सब कुछ चेंज हो जाता है ऐसा लगता है। सो जो परवरिश हमें मिली और जो परवरिश अब हम दे रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। हम लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने अपना बचपन देखा है और हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। फॉर और जो नेक्स्ट जनरेशन अब मैं और देख रही हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू अनदर जनरेशन नाउ, सो वॉट आई एम सीइंग नाउ, अब पेरेंटिंग बिल्कुल बदल चुकी है माता जी। सो लाइक नाउ वी डोंट वांट टू से नो टू आवर चिल्ड्रन एट ऑल। द रीजन दैट दे वांट समथिंग दे शुड हैव इट। उन्होंने किसी चीज़ की इच्छा जताई तो हम एक की बजाय चार लेके उनको देते हैं। तो पहली बात तो नो नहीं सुनते क्योंकि हम उनको सप्रेस नहीं करना चाहते उनकी फीलिंग्स को, पहली बात। दूसरी बात, उनका खाली कुछ चीज़ को चाहना ही क्वालिफिकेशन है उस चीज़ को पाने के लिए। तीसरा है कि उनको हम इतना इनकरेज करते हैं और हम वी मेक देम फील वेरी स्पेशल कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है कहीं पे तो भी हम उनको अवार्ड्स एंड मेडल्स देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स दे या ना दे, हम खुद से भी देते हैं उनको, काफ़ी अवार्ड्स देते हैं उनको। And then when these children, I just wonder when these children, and they're also coming now in the real world, they are unable to cope with the stress of today's world because when they join the corporate world, so corporate world only sees the numbers, they don't see the long term goal of anybody's life. So then they and वहाँ पे participation का कोई medal नहीं है, you have to, and promotion, your parents can't get you promotion over there. So corporate world is very ruthless, if I may say so. Then That's in right. today's day and age, it so happens, Mataji, that we are living in the age of complete technology, and thanks to Corona, so और भी ज़्यादा technology से access बढ़ गया है. So we are in the age of Facebooks and Insta where we use filters and we don't show our real feelings and we say that life is amazing. We may be depressed, but we will say that life is amazing because we know how to use filters. Similarly, the stress of validation from others really causes a lot of stress. हमारे ज़माने में होता था कि अगर पेरेंट्स ने बहुत अच्छा बोल दिया तो हमें बहुत अच्छा लग जाता था, पर अब हम वैलिडेशन, सो इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, it's all about environment, and it's all about, what do I say, impatience also. Uh, it's immediate gratification. हमें कुछ भी चीज़ चाहिए, अमेजोन खोलो, तुरंत ऑर्डर करो, वी डोंट हैव टू वेट टू परफॉर्म और वी डोंट अर्न आवर रिवॉर्ड्स। ना द That's चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग सो। सो माता जी, क्या तो हम खुद करें और क्या हम बच्चों को सिखाएं? इट्स अ कंप्लीट bewildered thought now. this is actually, I would say, we have actually made our life so complex. It is not simplicity खत्म हो गई लाइफ में, complexity आ गई है. The generations we're talking about, technology has brought so much of life complex कर दी है. But we can simplify. It's not difficult. If we remain calm, composed, patient, we can simplify. But हमें बड़ी impatience है. हम चाहते हैं आज ही result मिल जाए. जो हम कर रहे हैं बस instant. As you said, no? Instant. And as you said, the technology like the Facebooks and Instagrams, what is that? What is actually, they have filters. Everybody is not showing their self. वो कुछ भी होता है, it's just fake, you know. On the Facebook, everything is fake. I mean, not everything, but still, I'm talking the material world में, materialistic world में, spiritual world में तो फिर भी हम technology use कर रहे हैं to show the, you know, the lectures and discourses and all that. But material world में क्या होता है? Going to 8-10 friends मिली हैं, वो किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में, उस होटल में चेक इन नहीं भी करा है तो उसके आगे खड़े होकर वो फोटो खींचते हैं कि उस टैग करेंगे तो वो लोकेशन का वो आ जाएगा, एंड द वर्ल्ड विल नो वी वर स्टेइंग इन सच अ बिग होटल, या वी हैड डिनर देयर, वी हैड लंच देयर.
So they just want to put it's a show off world. It's become like that. And that these things have given easy access to all that. The Facebooks and people want to create that hype, and everybody wants कि मैं I look the best of it on the Facebook. Everybody wants to look the best. अंदर से वो depressed होंगे पर ऊपर से the fake smiles are there. So it's like a complex life. We don't want that. We have to teach our children the best thing is your future. You want to be very safe and secure. You should live a simple life. Simple life means high thinking. Simple life doesn't mean that you don't wear nice clothes. Simple life doesn't mean that you don't live in a nice house, you don't drive a nice car. Simple means having high thinking. Simple life means high thinking, content life. Not running after the material world, not running after, not being in the rat race. The one word, rat race, we should tell our kids. Don't be in the rat race. And be calm and composed. Any decision you have to make, the best future is actually depends upon the decisions you make. Decisions you make today is going to affect, influence your future tomorrow. So the decisions how you will make, you have to make those decisions. You have to be very powerful, very strong. स्ट्रेंथ होनी चाहिए. राइट डिसीजन के लिए भी स्ट्रेंथ होना चाहिए और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो स्ट्रेंथ चाहिए. तो वो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? वो स्ट्रेंथ आएगी व्हेन योर जो आपकी रूट्स है वो स्ट्रांग है. जो पेड़ की रूट्स नीचे तक गई होती है वही पेड़ गिरते नहीं है. जब पेड़ की रूट नीचे गहराई तक नहीं गई है तो पेड़ का गिरने का खतरा रहता है. सो कहा जाता है जो लंबे सीधे तने वाले पेड़ हैं वो अगर 50 फुट लंबे हैं तो वो उससे डबल हाइट में अंदर भी जड़ें हैं उसकी. तो जड़ें स्ट्रांग होंगी तो कहीं भी हम गिरेंगे नहीं, हम कभी भी गलती नहीं खाएंगे. और अगर हमने अपने बच्चों की जड़ें स्ट्रांग कर दी हैं तो नो मैटर व्हाट इन द वर्ल्ड कम्स दे विल फेस इट फियरलेसली. एक्चुअली वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन फियरलेस. वी ऑल हैव टू बी फियरलेस फर्स्ट आवरसेल्व्स. हमें भी फियरलेस होना है. हम फियरफुल हो जाते हैं, कुछ काम नहीं बनता है तो हमें भय लगना शुरू हो जाता है. अब क्या होगा? कोई काम बिजनेस में नहीं हुआ, कोई रिलेशंस अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या होगा? टुडे आई वाज सिटिंग विद समबडी एंड दे वर टेलिंग के उनकी दोनों डॉटर्स के डिवोर्स हो गए हैं. एक का तो 2 बार ही डिवोर्स हो गया. सो लुक वेयर द लाइफ इज गोइंग. इट्स सो डिफिकल्ट एक्चुअली फॉर टू पीपल टू स्टे टुगेदर इवन. तो क्यों? क्योंकि लाइफ को उन्होंने सिंपल लिया ही नहीं, उन्होंने कॉम्प्लेक्स करते चले गए. रिलेशनशिप्स बिकम कॉम्प्लेक्स. अगर सिंपल रखते हैं, फॉरगिवनेस के ऊपर रखते हैं कि चलो हमें एक दूसरे के साथ रहना है, वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर्स, वी हैव टू सी टू द गुड हैबिट्स ऑफ ईच अदर, फॉरगिव द बैड हैबिट्स एंड ट्राई टू बी नाइस एंड बिकम सिंपल इन आवर लाइफ. पर वो है ही नहीं. द गोल हैज गॉन समवेयर एल्स. द गोल हैज बिकम, oh I want to party, you don't let me party, I divorce you. I want to go out with friends, you encroach my space, I divorce you. So simple, छोटी छोटी चीजों पर they take such big decisions. So big decisions need the mind that is calm. Big decisions, they don't think that this to be a big decision of life. They think oh ये तो छोटी सी बात है, चलो ये पार्टनर पसंद नहीं है, divorce, next partner. So what is this? This is actually not the right destiny for us. We are shaping our own destiny. We want to shape. So we have to be very simple and we have to be, हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए अपने निजी जीवन के बारे में, अपने बारे में. Introspection is very important in life. So if children are taught to introspect, तो वो अपने simplicity को खोएंगे नहीं. That simplicity will remain with them. वो simplicity आएगी जब high thinking होगी. So we have to give one thing to our children is high thinking. What is this high thinking? This high thinking is a high character, a character that has all the moral values in it. A pura package. High thinking means you have a big package with moral values in your character. The right character building. So yes. Next, what do you want to ask? ब्यूटीफुल माता जी, आपने एक वर्ड में सब कुछ अंदर उसमें सब कुछ डाल दिया. सब कुछ डाल दिया. हाई थिंकिंग एंड सो वी हैव टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी इन आवर लाइव्स. जो हम इतना ज़्यादा ऑन सरफेस पे रह रहे हैं. चिल्ड्रन हैव वेरी वेल एडजस्टेड विद द आइडिया दैट फ्रेंड्स आर फॉर फन.
एंड Yeah. रिलेशनशिप आर ऑन सर्फेस. तो वो जो डीप रूटेड रिलेशनशिप थी, डीप कॉन्वर्जेशन थी, वो पूरा दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी फाइन विद इट नॉट टू हैव इट. सो जब वो आगे चलते हैं और वो अपना स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते, तो वो गैजेट्स की तरफ जाते हैं बजाय कि ह्यूमन बींग्स की तरफ जाने के. दे गो टुवर्ड्स गैजेट्स एंड देन वेरी इजली टुवर्ड्स द बॉटल एंड देन टुवर्ड्स अ रॉन्ग कंपनी इन एसोसिएशन. So who's not listening to them but just being a party to their good and bad times, that's it, and fun times. So that's very beautiful, Mataji, that the roots have to be strong and we have to build in their characteristics. So abhi tak, one was rising early. We will focus more on more points now. Yes. Mataji, Yes. if I may ask that, how, what is your routine for the day? How do you pack up so much in the day? Because when I listen to the chores that you do, I feel tired. So how do you pack your day with so much, so many things, and what's your routine, if I may ask? That's a very nice question. You see, my routine has been for the last 23, 24 years getting up early in the morning at 3:30 to quarter to 4 every day. And then it is uh, when I listened about this high thinking and a simple life that I wanted to adopt immediately. So, one thing, if we want to take it, it says in the scriptures, if we want to change yourself, you should accept the things immediately. And I wanted to do it. Like, I wanted to compete myself every day. It was in the sense that if my mind said, no, that you slept late yesterday, why you want to get up early in the morning? So I used to tell myself, being a businesswoman in the past, I used to say, if there had been some client of mine and saying in the morning, I'm coming to your home at 3:30 in the morning and giving you a check worth like some lakhs, I would be up throughout the night and would be waiting for the doorbell to ring, you know. And then here I am getting a chance to glorify the Supreme Lord, the King of the Kings, and who is giving me all the checks, everything is coming from him. And then I am not having any gratitude for him. मेरा उनके प्रति कोई gratitude नहीं है जो मुझे सब कुछ दे रहे हैं, so that is a shame on me. So I should think that way, that he's giving me the check worth lakhs and lakhs. So I should get up and attend the Mangal Aarti. That is the first thing I should do. And I'm telling you the truth. ये मैं अपने आप को रोज यही कहती थी. जब मैं मेरा मन नहीं होता था नहीं उठने का भी, तो आई यूज्ड टू टेल, और फिर उसी टाइम मैं उठ जाती थी. एंड इट हैपेंड. सो कभी अगर आई गेट लेट, लाइक 3:30 की जगह 5 o'clock उठी हूँ, तो माई head would spin, my eyes would swell up, and I would feel very, very bad. So I would feel guilty. So I thought that why do I want to feel guilty? Forget it. I want to get up on my time itself. And getting early in the morning, I saw कि मुझे इतना time मिल जाता है, ample of time. When people they get up by 8 o'clock, 9 o'clock, I tell them my half the day is gone already. और वो 9-10 बजे उठकर भी कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी उठ गए, आज तो हम बड़ी जल्दी जल्दी तैयार हो गए, 11 बजे तक रेडी हो गए आज तो. I simply have a laugh at that. So सुबह उठकर meditation karna, and especially the japa meditation, what I'm talking about, this gives you a lot of strength. This pacifies your mind. This gives you the strength to take right decisions. आप डिसीजन जो लोग हैं वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ के, अगर आप, क्योंकि उस टाइम सारी दुनिया सो रही होती है. मैक्सिमम पीपल आर स्लीपिंग व्हेन यू आर अप, एंड you see the sunrise every day, you're outside, you imbibe the positive energy, और वो पॉजिटिव एनर्जी रियली इट वर्क्स. और ये स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं कि जो लोग 7 बजे के बाद उठते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के असुर हैं. दे आर असुरी प्रवृत्ति. Till 7 o'clock, those who get up, like between 6 and 7 also they get up, they are of demigod level, वो कह रहे थे, फिर भी देवताओं के गुण है उनमें. But those who get up before sunrise, they get the qualities, कहा गया है, विशुद्ध सत्वा. They are out of the तीनों मोड से बाहर है वो. That is the Vasudev state. That is the state where you are actually in the association of the Supreme Lord. तुम भगवान की association में होते. So who would not want to take that association? Why do we want to miss that? So that is actually one of the reasons of my energy. What do you want to know?
And then After that, Mataji, I mean, uh, after that, you don't take a nap in the daytime, or how do you no, like? I don't get a Where do chance. you? I don't get a chance to take that. If I've I never would get it that early, I would always look for a chance to take a nap. So maybe a power nap. Maybe my mind would be there only. that that doesn't work for me. If by chance, even if sometime I do take it, then it's very difficult for me to sleep by 10 o'clock, 9:30, 10. Usually I sleep by 10:30 and maximum by 11. Hmm. But if it happens, if I'm late also, but I do get up by 4 o'clock, 4:15, before 4:30. So that happens. And then I do all my household chores like other ladies. It's like that. And then I sit down. I finish my 16 rounds. What we do, the japa meditation, and then I do my reading also in between the day. And but a whole day, it's actually mine is revolving around the Supreme Lord. It happens so. It's been my routine throughout my like. As you want to know, I was a businesswoman earlier, but then when I joined, I went into the meditation. I left my business. I could not handle it. I did not feel like doing it because I wanted to be more involved in spirituality. I wanted to be more involved and gross in it completely because it gave me happiness. It gave me a lot of happiness. I did not find happiness in earning a lot of money. I didn't want it that time then. I wanted to be more into spiritual life, to enjoy more of listening, more of the kirtan, doing more of reading, knowing more of the Supreme Lord. And जो blessings है, भगवान की blessings आती हैं. When you are into this, he helps you. And then you advance gradually. And सारा दिन मेरा ऐसे ही निकलता है. You know it. Like I'm among the devotees. Then in the evening, I give a class in the evening, morning. So it's there that sometimes it's three times a day I'm giving a class, and it takes a lot of energy in speaking. But then it's become now it's into me now. I cannot live without it. It's happened that way. So preaching gives you a lot of energy because you're talking of the Supreme Lord. He is the source of positive energy. We should not forget. भगवान जो है वो source है positive energy के और positive energy उनसे आती है. अगर हमें चाहिए positive energy, that comes from him. He is all attractive. So what he gives to his preachers, those who preach about him, he gives that attractiveness to them. It's not I'm talking about the physical attractiveness that he makes you very beautiful physically, but he makes your mind so beautiful that other people get attracted to it. They get attracted to your talk because it's not you, it's Krishna speaking. He makes you a tool in his hand. You become an instrument in his hand. So that True, happens. Madhviji. When you Yes. talk, when the subject matter is very energetic, then you automatically feel the energy. Yes, Mataji, which is very true. When we talk or when we gossip, when we talk about others, तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ड्रेन करता है इमोशनली. हमको खुशी नहीं मिलती है किसी के बारे में निंदा करने में, गॉसिप करने में, किसी के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलने में. वो कहीं ना कहीं हमें ड्रेन करती है हमारे इमोशंस को. और when you preach, जब आप करते हैं, so that I get the secret here. And I also remember one of the Bollywood I mean, Hollywood actors, Jim Carrey or somebody said that, I wish that everybody, every soul in this continent should become rich so that they know that happiness is not in richness. It is, Yes. जैसे आपने अभी कहा, spirituality में इतनी happiness है. So happiness is not, I mean, richness is not the parameter for judging happiness, which is so beautifully said, Mataji. In between, I'll just take few questions because they are being flooded. So, Yes. Prem Chawla ji पूछना चाहते हैं, how can we get rid of bad habits like निंदा, झूठ बोलना? How can we teach good habits in our children? Yes, the first thing is we have to actually follow this. हम निंदा ना करें, हम झूठ ना बोले. And ये कैसे जाएगा? ये अनर्थास है. We talk about this every day in our lectures. Every day, एक दिन दो दिन में we do talk about this. The अनर्थास को अगर rid off करना है, you want to get rid of them, तो हमें क्या करना होगा? हमें जपा मेडिटेशन करना होगा. भगवान के नाम का जप करने से हमारे अंदर से ये अनर्थ अपने आप चले जाते हैं. और ये अनर्थ जो है दीज आर एक्चुअली दे आर ड्रेनिंग अस. वो हमारे माइंड को हमारे माइंड पे हावी होते हैं. हमारे आदतें जो है वो बिगाड़ देते हैं. हम जब झूठ बोलते रहेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और हमारी हैबिट हो जाएगी गॉसिप करना, निंदा करना.
और gossiping जो है, as you said, rightly said, it drains our energy, it imbibes negativity in our lives, because you're not talking about the supreme lord, you're talking about other people. So when we talk about people, that is not good, वो अच्छा नहीं है. We should talk about the supreme lord. बात करनी है तो उनकी करें. It is said, जो सबसे लोअर लेवल होता है, when we talk about others behind their back, especially we are slandering them, जब हम उनके बुराई कर रहे हैं, so that is not good. और ये सिर्फ जाएगा जाएगा, भगवान का नाम जितना अच्छे से जपेंगे, ये उतनी जल्दी हमारे अंदर से निकलेंगे. हरि बोल. यस. हरी पूनम जी कह रहे हैं कि पीपल हु आर स्कैर्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी दे क्लिंग ऑन टू द रियल वर्ल्ड फॉर एस्केपिज्म. सो दैट्स आई थिंक शी इज मेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड देन वी स्टिक ऑन टू द रियल वर्ल्ड. This is another question which comes from Vishal Hiranandani ji. Hare Krishna Mataji. I transformed myself and my attitude after coming in association with devotees. My material success surely has reduced, and but I'm in profit, spirituality. I'm in profit of spirituality, but it demotivates materialistic people. What to do? I mean, they don't feel very highly of our spiritual profits. They only Because evaluate you with our materialistic yeah, with your profits. materialistic profits. But जब तक हम मटेरियलिस्टिक लोगों को पास तो वो एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं है, उनके पास वो आंखें ही नहीं है आपको देखने के लिए. दे डोंट हैव दोज आईज. यू नीड दोज आईज. सो दोज आईज ओनली के जब वो तो आपको उसी से देख रहे हैं कि आप कितने अमीर हो, कितना धन आपने कमाया है, वो उससे आपको जज कर रहे हैं. बट आपको जो मिल रहा है, वो आनंद, जो ब्लिस मिल रहा है भक्ति करने से, वो दे कैन नॉट गेस इट. एंड उनको इट डीमोटिवेट्स पीपल व्हाट टू डू. तो उनकी मोटिवेशन से हमें क्या लेना देना. वी डोंट वांट. हम उनके लिए अपना करियर स्पिरिचुअल लाइफ का खराब नहीं कर सकते कि उनको शो ऑफ करने के लिए. वी शुड नॉट डू दैट. वो भी मानेंगे इसको. विशाल, इट मे बी टू अर्ली फॉर यू, बट it happens. So I have to experience this, because in our circle also, where we've seen that people earlier, they used to say that they've gone mad, the whole day chanting and going and talking about supreme lord. ठीक है, थोड़ी देर कर ली बात. ऐसे थोड़ी होता है कि सब कुछ करना है, सब कुछ तो बैलेंस करके चलना चाहिए. क्या जरूरत है सारा टाइम भगवान का नाम लेने की. हाँ, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है. People say that. Oh, they were surprised to see me always in a cotton sari and preaching and going all over the world and talking about the Supreme Lord, talking about chanting. So they said, "What is this like? This is you've become really mad." They would say that. तभी मैंने कहा, the strength कहाँ से आती है to bear all this? तो somebody में से अगर हमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम दूसरे दिन ही छोड़ देंगे. अच्छा नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं तो let me forget it. Let me be like them only, तो मैं स्लोली कर लेते हैं. वो स्लोली के चक्कर में तो कभी होगा ही. इट विल नेवर हैपन. बिकॉज इफ यू गेट, अगर आप फेयरफुल हो गए हो लोगों से, तो लोग तो आपको कभी भी सक्सेसफुल, चाहे आप मटेरियली सक्सेसफुल भी हो जाओगे, वो तब भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे. इट विल हैपन. फिर भी वो कुछ ना कहेंगे, अच्छा इतना पैसा कमा लिया, जरूर कोई गड़बड़ करी होगी, इतना जल्दी इतना पैसा कैसे कमा सकता है कोई. लोग कहीं पर नहीं छोड़ेंगे. But why not then follow the real path of life, जो हमें खुशी देता है. और धीरे धीरे ये जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, ये भी इसको मानेंगे. जब उनके भी ऊपर कोई कष्ट आता है, दे विल रन टू यू ओनली, ये हेल्प अस आउट. दैट ये चीजें जो तुम्हारे को सक्सेस दे रही है, जो तुम्हें पीस दे रही है, हैप्पीनेस दे रही है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न इट. दिस टाइम विल कम. इट कम्स इन एवरीबडीज लाइफ. सो डोंट वरी. तो हमें इसको एस्केपिज्म नहीं है. स्पिरिचुअल लाइफ हमारी एस्केपिज्म नहीं है फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड. वी आर नॉट एस्केपिंग द मटेरियल वर्ल्ड. वी आर लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड yet not touching the material world. That is our goal in life, that we may not touch it, but this is the fact that we have to live in the material world. इसको छोड़कर जा नहीं सकते हम. मृत्यु लोक है, ये सब लोगों के बीच में रहना है हमें. And we are not brahmacharis, vanprasthas, we are grasthas. So ग्रस्त जीवन जो है, वो सब लोगों के बीच में रहना है हमें. बट हमें ऐसा रहना है कि हम उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है. हम स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है.
क्योंकि हमें ये फेथ है कि भगवान हमारे साथ खड़े हैं, ही इज देयर विद अस, ही विल प्रोटेक्ट अस, ही विल टेक केयर ऑफ अस, सो डोंट वरी। एंड जब हम ये अभ्यास कर लेंगे, जपा मेडिटेशन, तभी भगवान ने अर्जुन से कहा अभ्यास ते कौनते, he said put it in your habit, krishna talks of habits, he says इसको अर्जुन अपनी हैबिट बनाओ। तो ज्ञान की वैराग, he said ज्ञान की कुठार, you should have the knowledge, so that's why reading is important, knowing the scriptures is important, listening to the discourses is important to become strong, and japa करना बड़ा important है। तो ज्ञान की कुठार लेनी है, युक्त वैराग्य, डिटैचमेंट। So this has to be in life, that we are detached to what others say. We are not attached. We don't take what they say. So that's it. Hari bol. Very, that's absolutely very well answered, Mataji. That it's a filter, Vishalji, for you. So you will be left with the best. So do not worry about it. You know your path and you're on the right path. So these things are just filter. Mataji, आगे नेहा आहूजा माताजी बोल रहे हैं that Mataji, if we don't like something about the other devotee and they are very sincere in their devotion, should we talk to them about that issue or just let it be and continue with our bhakti? कोई भक्त बहुत कोई डिवोटी बहुत सिंसियर है और हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं आती है, तो क्या हमें उसे बतानी चाहिए वो बात, या फिर अपनी भक्ति अपने आप बस कंटिन्यू करना चाहिए और उसको अपनी भक्ति करते करते रहने देना चाहिए? Genuine feedback you can give. It's not, you're not criticizing. दूसरों से बात करने की बजाय उसी व्यक्ति से बात करनी चाहिए, and give the genuine feedback, and in a nice way, not in a criticizing way or in a demeaning way, जैसे हम कहते हैं ना अपने आप को ऊंचा दिखा के दूसरे को नीचा दिखाना हो, ऐसे नहीं। Sincere like a friend, if you give that, it can help them, and they can tell you the reason also, the what reason is behind that, तो आपके relations भी better होंगे, rather than you will always be carrying a grudge that yes, you become you have an opinion for them, that opinion will might change. So we should talk to them and talk in a friendly way, in a sincere way. That's it. Beautiful, Mataji. So Neha ji, talk to them instead of talking about them. It'll Yeah. solve the problem. शिवानी जी कह रहे हैं कि माता जी, kids in teenage are not ready to make any changes. What should we do? Yes, the age is that, teenagers, it's very difficult. But Just हम अपना example बना के रखें, it's always, kids will be always difficult, whether it's teenage or when they grow up also. They are always difficult for the parents to understand. Because वो हमेशा यही आपको देते रहेंगे, जैसे अभी विनी said that they would always claim that आपकी generation पुरानी है, हमारी नई है, बहुत gap है, आपके time में ये नहीं था, हमारे time में ये है, but they forget that सब कुछ relationships तो वही थे, technology आई और गई, that is different. तब तो वहां भी तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हम बच्चे थे तो तब नया नया टीवी आया था, कलर टीवी आया था, वीसीआर आया था, और उसके बाद अभी इंटरनेट आ गया, और फिर आगे टेक्नोलॉजी आ गई, 4G से 5G हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी विल बी ऑलवेज राइजिंग, बट रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। पेरेंट्स पेरेंट्स ही रहेंगे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ही रहेंगे, बट चेंजेस बच्चों को करने के लिए द मोस्ट प्राइमरी थिंग इज दैट वी शुड सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर देम, दैट्स इट। अगर आप फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ को एज इट इज ले रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप वो हैबिट्स उनको दिखा रहे हो करके, वो तो रोल मॉडल मानते हैं आपको। इन देयर हार्ट्स दे टेक देयर पेरेंट्स एज द रोल मॉडल, इट इज देयर। वो कोई बाहर का Very व्यक्ति true. अगर, या कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए कुछ कहेगा तो दे विल ऑलवेज से नो, माय पेरेंट्स आर माय रोल मॉडल्स, दे वुड ऑलवेज से दैट। सो आप अपने उस मॉडल जो वो आपको मानते हैं उसको आप प्रूव करके दिखाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। what Very you true, are Mataji. what you want to inculcate into them, you have to prove it in your character first. Yes, I'm following them, that's very Very, important. very, very well said, Mataji. Very well said. They will guard you in front of others, but I mean, within home restrictions, they may be very different. So keep Mm. yourself also updated so that they take you as friends and not an outdated model for anything. So it's very important that we also keep ourselves updated with everything, with what's going on, with technology, with everything. Mataji, there are two questions which are a little similar, so I'm taking Mm. both the questions together. Ritu Mataji and Kavita Mataji, they're saying that people think that we are wasting time in bhakti,
and the family members a lot of time restrict to do more bhakti. So how should we maneuver our way through it? हमको कैसे इसमें से मैनेज करके और स्ट्रेटेजिकली कैसे इसको हैंडल करना चाहिए? एक्चुअली अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो तो आप हर चीज अच्छे से कर सकते हो. अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो, आई ऑफन सेड, यू बिकम अ नाइस पेरेंट, यू बिकम द बेस्ट पेरेंट, नॉट नाइस ओनली, यू बिकम द बेस्ट पेरेंट. अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो, आप उसके पीछे समझ रहे हो, भक्ति करने का अर्थ है आप उसका जो अर्थ है वो समझ रहे हो कि हमें अपनी लाइफ को सिंपल रखना है. भक्ति सिंपली डजंट मीन 16 माला बस करने के लिए करना. दैट इज नॉट भक्ति. 16 rounds chanting attentively and nicely done, and they are done with a goal, with a point in life that I have to advance spiritually. I have to keep away from those anarthas, from those vices. I don't want them in my character. I don't want them in my life. Anartha se dur rehna. So agar aap aisa karoge, you will become a nice, the best mother, best daughter, best you will become the best daughter-in-law. You will become the best human being. I would say you would surrender, you would do all the household chores nicely, everything nicely. तो लोग आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आप ऐसे नहीं, आप यहाँ पर अनदेखा कर रहे हो, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने घर का काम अच्छा नहीं किया, आपने वो अच्छा नहीं किया. ऐसा होता ही नहीं. जो भक्ति अच्छे से करता है वो सारे काम अच्छे से कर लेता है. दिस इज फैक्ट. इट इज सेड, द स्क्रिप्चर से, वो दक्ष होता है. अ डिवोटी इज वेरी स्मार्ट. ही कैन डू ऑल एवरीथिंग वेरी नाइसली. बट ही हैज टू फर्स्ट डू दी स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना और अच्छे से करना. तो कोई अगर आपको ये कहता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो उसको यहाँ दिख नहीं रहा है. पर अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो तो आप घर का काम, आप बाकी काम भी बहुत अच्छे से करो. ये फैक्ट है लाइफ का. आई वुड से दैट. और किसी को मौका देना ही नहीं चाहिए. अगर आप भक्त हो तो आपको वैसे ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के करना चाहिए कि किसी को मौका ही ना मिला ये बोलने का कि आपने कोई काम छोड़ दिया, आप में कोई कमी है. ये भक्त को प्रयास करना है. ये प्रयास भी करना है कि मुझे बाकी सारे काम इतने एफिशिएंटली करने हैं कि कोई मेरी भक्ति के ऊपर ये ना कहे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा ये काम छूट रहा है मुझसे. तो ये एक हमें हमेशा सोच के चलना चाहिए. जब हमारी एक्चुअली कृष्णा वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. कृष्णा सेज, भगवान ये कहते हैं, मैं तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से चलता हूँ, व्हाट यू आर थिंकिंग. क्योंकि थिंकिंग इज गोइंग टू बी पुट इनटू एफर्ट्स. अगर थिंकिंग होगी तो एफर्ट्स आएंगे. व्हाट यू हैव थॉट, दैट इज गोइंग टू बिकम योर एफर्ट. दैट इज गोइंग टू बिकम योर विलिंगनेस टू डू इट विद डिटर्मिनेशन. सो भक्ति गिव्स यू डिटर्मिनेशन. जो चीजें आम लाइफ में लोगों को नहीं मिलती हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में they don't get these things so easily. They run after people to give them the tips, you know, कि मेरे अंदर कमिटमेंट कैसे आए, मेरे अंदर डिटर्मिनेशन कैसे आए. जो भक्ति करते हैं वो पहले से ही कमिटमेंट भगवान उनमें डाल देते हैं. क्योंकि आपने पहले आपने अपनी आदत बना ली ना कमिटमेंट की. गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे कंसिस्टेंटली. तो आपने क्या करा, यू प्रॉमिस टू योर सेल्फ that I will rise every day morning and chant the holy name. So first part is rising every day morning and consistently. तो आपने क्या करा, आपने अपने आप को वो हैबिट डाल रहे हो. आप अपने आप को उस हैबिट में डाल रहे हो कि मुझे ये करना है. डिटर्मिनेशन है, क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, कमिटमेंट की और डिटर्मिनेशन. यू आर इनकलकेटिंग दैट क्वालिटी इन यू unknowingly. You are becoming slowly determined. और वो धीरे 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 आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रोज उठ रहे हो. इतने साल हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे, साल हो जाएंगे. डेज विल कन्वर्ट इनटू मंथ्स, मंथ्स विल कन्वर्ट इनटू ईयर्स, एंड यू सी यू आर बिकमिंग डिटरमिन्ड. डे बाय डे यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर. तो स्ट्रेंथ आ रही है, कमिटमेंट. आपको अननोइंगली आपने वो हैबिट्स इनकलकेट कर ली. अब अगर आप कृष्णा को साइड में भी रख दो, भगवान का जप ना भी कर रहे हो, पर आप सुबह उठ रहे हो, एवरी डे यू हैव प्रॉमिस्ड योरसेल्फ. So you are becoming, your habits are changing. तो ऐसे ही जब आपने मेडिटेशन भी कर लिया साथ में, so that is what we say सोने पे सुहागा. So you have now inculcated more and more goodness in you. You are getting imbibed with positive energy. आपके अंदर unknowingly positive energy का स्टोर हाउस हो रहा है और आप सारे काम अच्छे करोगे. और ये प्रयास करना चाहिए कि मैं सारे काम अच्छे से अच्छे ही करूँ. Haribol. Answers go long. Haribol, Mataji. So, Mataji, absolutely. So, Krishna gives us strength.
Yes. and we have to give our 100% in whatever we do. That's the quality of a devotee, of a sincere devotee, because we have to. And the example is you. You're right in front of us. You wake up so early, you sleep, I mean the time that we sleep, but I still have to really cut down on my sleep, of being okay with 4 to 5 hours of sleep, because it just I hope I'm committed and I can just do it. So Mataji, if I can I mean just do the submission, what my realization from the talk show today is that habits make your destiny. And habits is a list of good qualities. If you inculcate in ourselves, then we become good examples, and then we set the same example, right example, for our children also. And we have to focus firstly on simple living and high thinking. Secondly, waking up early, you get time for yourself, you can organize your day in a better manner. Thirdly, you have to listen and you have to read scriptures, and युक्त वैराग्य आपने कहा, or if you want advancement in the spiritual life. And to all these good habits, one should be committed and consistent. So this is what my realization was. अगर हम एक दो भी कुछ कर लें तो I think we'll be making good habits. Yes. So, absolutely, Mataji. So, very, very nice session. Absolutely. So, before we end the session, Mataji, anything that you would wish to say both to the parents and the younger generation and the teenage also, like three generation, the younger, the teenager, and the parents, and today's parents. Yes, I would very much like to tell them that yes, destiny is in our hands. We can shape our destiny. Future is with us. Nobody can take it away from us. हमारा फ्यूचर हमारे पास है, हमारे हाथों में है, पर उसको बनाना, शेप करना हमारे हाथों में है. अब हम उसके लिए क्या करेंगे, जो आज के सेशन में हमने बातें की हैं, वी शुड ट्राई टू इम्बाइब देम इन आवर डे टू डे लिविंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेडिटेशन इज गोइंग टू काम अस, सूद अस, और वो हमें एनर्जी देगी, वो हमें हर चीज के लिए स्ट्रेंथ देगी. So one thing is, we should not leave the japa meditation. That is the formula. That is the actual formula which solves all the problems. In the beginning, I said Krishna is the mathematician. He's a mathematician, and mathematics means where we get the formula, knowledge of formulas that we apply and we solve the problems, the financial problems, and we solve all the mathematic problems. So likewise, Krishna has given formula to us also, that if we want to solve all our problems, last R was solution to all problems. Uh, so that's how, this is again solution we are giving to the problem, that how to shape your future. So how you shape your future is, you got to have this tact, that japa meditation, we have to accept that. तो जब हम जपा मेडिटेशन को हाथ में लेंगे, वी आर शेपिंग आवर फ्यूचर, वी आर सिक्योरिंग आवर फ्यूचर. बड़ा सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर होगा. व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड, हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होने वाला है. वी वांट सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑल द टाइम, यू नो. वी एक्सपेक्ट कि हम अगर टैक्स भी देते हैं तो वी वांट द government to give us some safety and security. That's why we pay the tax, that they should give us nice roads, they should give our medical help, they should give us the security we are looking for. That is why we pay the tax. So we always want some security and some safety. तो सबसे बड़ा है कि when we depend on the supreme lord, our future is very secure and very safe. क्योंकि और कोई, we have seen in the corona times, nobody could help us, everything failed. So only and only one person could help us, and that's the Supreme Lord. He could only take us out, and smilingly, and we have come out of it and we hope so that we are out of it. We hope for the best, that yes, we are out of it. So we have come out smilingly and with full confidence that yes, He is there to protect us. If He will take us away also, we are willing to go, but we want कि हमारा कहाँ गया है. जब हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है. चाहे हम भगवत धाम जाएं, चाहे हम यहाँ वापस आए, भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेता है, जो मुझसे जुड़ जाता है, उसको वो भगवत धाम की प्राप्ति होगी, या वापस फिर से वो मेरा भक्त बनकर ही आएगा. वो फिर से ऐसा ही आएगा. तो हमारा तो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर है. तो भगवान से जुड़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is the solution to many, many problems. It's the biggest formula that solves all the problems. So I would request you all, please accept this formula and apply this in your life.
just chant and see what happens. Chant and be happy. This happiness is very important for a very safe and a secure future. So that is how our destiny is in our hands. That is how we shape our future. When we are connected to the Supreme Lord, our future is definitely going to be the best one in the world. You will be the best person with a safe and secure future. Hari Bol. Hari Bol. Beautifully said, Mataji. So I wish everybody a very safe and secure future. थैंक यू सो मच दर्शकों, थैंक यू सो मच ऑडियंस. हम अगले सप्ताह फिर इसी जगह पे और इसी समय पे मिलेंगे. थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, Thank you. ब्यूटीफुल Thank सेशन. you so हरे much. कृष्णा. Hare Krishna.